Okay, so if I am taking the example of, let's say, sodium and sodium, okay, and I'm taking the example of chlorine and chlorine. Now tell me, which will have more stronger bond strength out of these two, which will be having more stronger bond strength? Yes, good. It is your chlorine, chlorine. Why? Because the overlapping here is between 3p and 3p overlapping. And the overlapping here is between 3s and 3s overlapping. And always 3p overlapping is going to be more efficient, more stronger as compared to the SS overlapping. Fine. Then another case for strength is when internuclear distance between bonded atoms is not constant. Okay, so in that case, bond strength, I will give you the example, is inversely proportional to the bond length. Okay, or you can say that internuclear distance. So what happens is, suppose I am taking the example of H and H, then I am taking the example of HCl, and then I am taking the example of ClCl. So when internuclear distance between the bonded atoms is not constant, it's like here you have the bond between H and N, here the bond is between H and Cl, and here the bond is between Cl and Cl. So they are not constant. Okay, now tell me what should be the order of bond strength. What should be the order of bond strength here? My voice is breaking, yeah. For Krishna, the voice, you're saying that voice is breaking. My voice is okay, no? Okay, fine. So tell me the bond order. Bond strength is inversely proportional to bond length. Okay. Now here the bond length is between 1s and 1s. Here it is between 1s and 3p. And here it is between 3p and 3p. Now, here we are taking the difference between 1s and 1s, and here 3p and 3p. So when we were talking about here, we said that अगर same pp overlapping is greater than sp overlapping is greater than ss overlapping. So ये केस तब था जब उनका एनर्जी लेवल भी सेम था. अगर मैं 3s ले रही हूँ, 2s ले रही हूँ, या 2p ले रही हूँ, all these cases if I am taking, so in that case it is coming out to be same. तो ऑर्डर आप निकालोगे, दैट इज परफेक्टली करेक्ट. बट यहाँ पे आप कंपेयर किसके बीच में कर रहे हो? 1s और 1s, 1s और 3p, एंड 3p और 3p. तो एनर्जी लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. तो जो स्पीशीज न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. सो इस केस में अब ऑर्डर हो जाएगा HH का ज्यादा, देन HCl का, एंड देन ClCl का. अंडरस्टूड? Is it clear now? Okay.
नेक्स्ट केसेस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कम्स। ध्रुव व्हाट आई एम सेइंग इज कि नॉर्मली क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू एसपी ओवरलैपिंग एज कंपेयर टू एसएस ओवरलैपिंग, बट वो तब होगा जब एनर्जी लेवल सेम है। अगर मुझे कंपेयर करना है 1s और खैर 1s तो होता नहीं है, 2s और 1s होता है बट 1p नहीं होता, और 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग करनी है, तो मैं हमेशा बोलूंगी 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा है। बट अगर मैं कंपेयर करना है 1s और 1s के बीच में और यहाँ पे 2p और 2p के बीच में, तो अब इसका एनर्जी लेवल हाइयर है। एनर्जी लेवल हाइयर है मतलब स्टेबिलिटी कम है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब एनर्जी लेवल सेम होगा तो 2p की ओवरलैपिंग या फिर 3p या pp की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ss क्या। बट अगर उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है तो आप ये चेक करोगे कि कौन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज में है। इज इट क्लियर? Okay, fine. Next case is when internuclear distance between bonded atoms is constant. ठीक है, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो उस केस में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आपके पास हमेशा डी, अगर डी पाई ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब डी और डी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो डी पाई ओवरलैपिंग बॉन्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग, मतलब किसी एक डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर किसी पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग के बीच में। ठीक है, अब पी पाई तो आपको पता ही है, पी पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम पी पाई बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे मैं आपको ये सारे बॉन्डिंग, वैसे तो मैं ओवरलैपिंग में आपको बता दिया है, बट स्टिल अगर यहाँ पे ये मैं डी ऑर्बिटल ले लूँ, जब ये ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं तो उसका जो दूसरा वाला साइज है वो छोटा हो जाता है। ये हो गया एक का, ये दूसरा यहाँ से आया, ये दोनों छोटे हो गए। तो दिस इज योर डी पाई ओवरलैपिंग। ये पूरा इधर ओवरलैपिंग हो गया, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। अगर मुझे डी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग करनी है तो ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, तो पी पाई और ये डी पाई, तो ये जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को वहीं पे बॉन्डिंग हो रही है, और ये पाई बॉन्डिंग कर रहा है। और पीपी ओवरलैपिंग तो आपको पता ही है, अगर पैरेलल होगा तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इन दोनों के बीच में जो भी ओवरलैपिंग होगी दैट इज योर पी पाई ओवरलैपिंग। राइट डाउन दिस। ठीक है, और नोट डाल के एक चीज लिख लो, अगर आपसे पूछे कि पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना है, सो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to the bond length। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है दो एटम्स के बीच में, ओके, सो इन दैट केस उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और अगर उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट डाउन दिस। सेकेंड नोट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात कर रही हूँ हैलोजेंस की, ओके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो उस केस में Cl2 Br2 F2 and I2, this is the order for bond energy। ये डेटाबेस है, लाइक एक्सपेरिमेंटली डेटा से फाइंड आउट किया है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दो क्लोरीन है,
ब्रोमीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन एंड आयोडीन। तो जब इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रही है तो किस बॉन्ड, इनमें से किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, एंड दैट इज योर क्लोरीन क्लोरीन। और ये आया कैसे है, दिस इज डेटाबेस, तो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें इसी का थर्ड नोट, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है I2 का सबसे ज्यादा, देन Br2, देन Cl2 एंड देन F। राइट डाउन दिस। डन राइटिंग? ओके, नेक्स्ट नोट राइट डाउन। अगर मैं आपसे पूछूं 2p और 2p ओवरलैपिंग में और 3p और 3p ओवरलैपिंग में किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? ट्राई टू आंसर दीज थिंग्स, तभी दिमाग ओपन होगा। यस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 3p ओवरलैपिंग की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2p। रीजन इज दैट कि 2p जो ओवरलैपिंग है, जब वो ओवरलैपिंग कर रहे होंगे आपस में, तो दे आर टू क्लोज टू ईच अदर बिकॉज न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो काफी क्लोज है एक दूसरे से। सो यहाँ पे देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनके बीच की अनस्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 3p और 3p ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन दी 2p ओवरलैपिंग। सो अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लेती, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड यहाँ पे फॉस्फोरस फॉस्फोरस, इन दोनों के बीच में किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है? व्हाट विल बी आंसर? यस, फॉस्फोरस। बिकॉज इसके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 3p की ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें 2p की ओवरलैपिंग होती है। साइज इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे चाहे तो लिख लो, which leads to inter electronic repulsions.
Write down this. Next topic is comparison of sigma bond strength. डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में यूजुअली आते हैं. सो जो आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, जैसे हो गया बोरॉन बोरॉन, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज योर बी डी और ई, वो कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एक्ट करने लग जाते हैं और जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर, रिपल्शन होता है. बट इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ओ ओ से ज्यादा होगा बिकॉज ओ ओ के अगर हम बात करें वहाँ पे दो लोन पेयर है, तो वहां पे और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से वो पाई बॉन्डिंग फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी. इसके बाद आ जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. देन you will have silicon bond dissociation energy. Then you will have phosphorus bond dissociation energy. Then sulfur again दो लोन पेयर होते हैं इसमें, bond dissociation energy. Okay, and these are the order which you have to remember. लिख लो. देन आएगा फ्लोरीन. फ्लोरीन का यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है एंड लास्ट में सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन. Okay, write down this. Done writing? Let me know. Okay, now let's talk about thermal stability. Now, what do you mean by thermal stability? Thermal stability का मतलब क्या है यहाँ पे? It's very necessary to understand the basic meaning of these terms so that you can understand the concept. What do you mean by thermal stability? Yes, yes, Sampada, but what is it? ये बोल रहा है थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसको भाप रखना, गुड, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो अगर, तो वो कंपाउंड कितना जल्दी ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है. बट अगर वो टेम्परेचर गेन कर रहा है उसके बाद भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब उसकी थर्मल एनर्जी या थर्मल स्टेबिलिटी क्या है,
ज्यादा है. So here thermal stability of covalent या फिर ionic compound is directly proportional to the energy required to break covalent compound. आयनिक भी बोल सकते हो या फिर आयनिक कंपाउंड into its gaseous atoms or ions. Write down this. थर्मल स्टेबिलिटी जो है ऑफ किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कितने उसके बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है. जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी इनटू बॉन्ड स्ट्रेंथ इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल एटम का खुद का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है. तो आप इस तरीके से भी थर्मल स्टेबिलिटी को रिलेट कर सकते हो. और तीसरा जो है ये मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड के लिए. थर्ड जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ionic compound will be equal to lattice energy. Okay, and which is directly proportional to आपको lattice energy का मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था है ना. Q1 into Q2 divided by radius of cation plus radius of anion. Right on this. Now let's do some examples. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर मैं ले रही हूँ I2 Br2 Cl2 F2, what will be the order of thermal stability here? What should be the order here? Try to find it. Okay, so this you have to remember that थर्मल स्टेबिलिटी जो है I2 Br2 Cl2 का जो एग्जैक्ट ऑर्डर है सबसे ये याद करना पड़ेगा. Cl2 का सबसे ज्यादा होगा, then Br2, then F2, and then last में I2. This you have to learn. And if I take the example of सेकेंड, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे HF HCl
HBr एंड HI। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? Here HF is the most stable one. All these things you have to remember. अगर मैं थर्ड एग्जांपल ले रही हूँ, SbH3, AsH3, PH3 और NH3, ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। जब नाइट्रोजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में NH3 का सबसे ज्यादा होता है, PH3, AsH3 एंड देन SbH3। सो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है अगर मैं हाइड्राइड कंसिडर कर रही हूँ। ओके, and then we have, let's say I have SnH4, GeH4, SiH4 and CH4। तो अगेन जो भी हाइड्राइड्स आप फॉर्म कर रहे हो, जो उनका स्मॉलर एलिमेंट है, दैट हैज द मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन द अदर वन। राइट डाउन दिस। Now if I am taking the example of, let's say I have Ki, KBr, KCl and Kf, again order is like this for halogens. Let's do one question. Thermally most stable anion, yes, options are your ClO, ClO2, ClO3 and ClO4. Tell me what will be the answer. If you can think of anything, let me know. ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं और हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई हैव हियर ClO। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे माइनस होगा, तो इस पे हो जाएगा +1, इस पे -2 हो जाएगा, इस पे हो जाएगा +3। आपको फाइंड नहीं करना है ना, दिस इज अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन इज नॉट लाइक दिस। इन सब पे माइनस चार्ज है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। आंसर आपका ClO4 माइनस। उसका रीजन क्या है, सेंटर पे आपके पास क्लोरीन है और 3 आपके पास ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी सॉल्व कर पाओगे। तो ये ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड कर रहा है और एक तरफ माइनस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, दूसरा जो है, अगर मैं कंपेयर करूं ClO3 से, तो क्लोरीन के पास यहाँ पे
यस, क्लोरीन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है और साथ में O माइनस है, तो एक O माइनस होगा और दो के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऐसे जब हम बोल रहे हैं ClO2 माइनस, तो क्लोरीन के पास अब दो लोन पेयर होगा, एक के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक के साथ O माइनस। और ClO माइनस मतलब एक क्लोरीन और एक ही ऑक्सीजन है, उस पे माइनस चार्ज होगा। ओके, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी। और इसके पास तीन लोन पेयर है लाइक दिस। तो अगर आप इन सब में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बोलता है, जो हम ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, लेट मी सी इफ आई कैन शो अ वीडियो ऑफ रेजोनेंस, जस्ट 1 मिनट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। Okay, there is this video I am showing you people. Okay, it is for 4 minutes video, and see what exactly happens in resonance. Audio is there in this video or not? Let me know if audio सुनाई दे रहा है या नहीं। Audio नहीं आ रहा ना, 1 second. Just give me 1 minute. Would it be in this position or would it be in this position? So it is found that the bond length and bonds around an atom. Okay, I want Or to show you something else. Just 1 minute. There was one really nice video for animation. I'm unable to find it. Just 1 minute. Let me see if this has this. 1, 2, 3, 4, and why was hybridization theory developed? Why is this theory so important? And how does it allow the chemist to envision a molecule in 3 dimensions? Watch this. In this chapter, we will explore some of the reasons why hybridization theory was developed. A student's ability to take a 2-dimensional molecule off the blackboard during lecture and fold it into 3 dimensions, or envision a molecule in 3 dimensions from a page in a book, is arguably one of the most essential skills when learning chemistry. The chemistry student who has the ability to visualize molecules in 3 dimensions is rewarded with a better understanding of chemical properties, physical properties, and most importantly, the ability to predict chemical reactivity. Understanding how atoms within molecules are oriented in 3 dimensions
requires an understanding of hybridization theory. From simple molecules such as ethanol to more complex molecules such as the highly toxic tetrodotoxin, the concepts of hybridization are the foundation to our understanding of molecular geometry. However, looking at a two-dimensional Lewis structure of a molecule affords much information to the scientist. For example, the overall connection of atoms within the molecular formula. After all, different structural and geometric isomers can be imagined from relatively simple molecular formulas. To introduce the concepts of hybridization, we will first focus all of our examples on the carbon atom. The basic principles discussed for the carbon atom can also be applied to other elements, which are explored in later sections. A carbon atom has 6 electrons in the following configuration: 1s2, 2s2, 2p2. The relative energy electron configuration diagram is another way to visualize where the electrons are located. Each arrow in this diagram represents one of the individual electrons of carbon. However, only the valence or outermost electrons are responsible for bond making and bond breaking. Thus, we can ignore the inert noble core electrons, which we can represent here as the helium element. This abbreviated electron configuration quickly allows one to ascertain there are 4 valence electrons. It would appear that there are only 2 unpaired valence electrons capable of forming covalent bonds, one in the 2px and one in the 2py orbital. However, it is well known that carbon forms a total of 4 covalent bonds to attain full valency. Thus, all 4 valence electrons must be involved in bonding. Hybridization theory was developed in order to better explain the 4 observed bonds of carbon. In addition, the hybrid model best explains overall molecular geometry of carbon. In other words, bond angles in 3 dimensions can be predicted. Possible hybrid combinations for a carbon atom are Sp3, 2, and Sp, and are explained in detail in subsequent sections. Let us first start by examining the shapes of the atomic orbitals for carbon. The 2s atomic orbital is a sphere, and the 3 2p atomic orbitals are shaped like dumbbells, oriented along the 3 axes, 2px, 2py, and 2pc. Think of these 4 atomic orbitals as 3-dimensional shapes, where you are most likely to find an electron 90% of the time. Notice that the electrons have access to both lobes for the 2p orbital. Starting from the abbreviated electron configuration for carbon, one can imagine promoting an electron from the 2s atomic orbital to the unoccupied 2pc atomic orbital. Although we now have 4 unpaired electrons for bonding, we still can't explain the experimentally observed bond angles for a tetravalent carbon. Thus, when we mix the 2s atomic orbital with all 3 2p atomic orbitals, we create 4 new degenerate energy hybrid orbitals. The shape of the new sp3 hybrid orbital is best characterized as 1 part s and 3 parts p. As with all orbitals, think of these hybrid orbitals as 3-dimensional shapes, where you can find the electron 90% of the time. The hybridized carbon now possesses 4 unpaired valence electrons and is said to be an sp3 hybridized carbon. When we superimpose all 4 sp3 hybrid orbitals onto the carbon atom, it becomes quite cumbersome and confusing. Thus, we simply show how the electrons in the hybrid orbitals are oriented in 3 dimensions. The 4 new hybrid orbitals attempt to get as far apart from each other as possible, 109.5 degrees. Think of this as the orbitals attempting to minimize repulsions between them.
Thus, they are oriented towards the corners of a tetrahedron with all angles at 109.5 degrees. Your instructor will often draw the sp3 hybridized carbon on the blackboard as shown. The two solid lines in this drawing are in the plane of the board. The wedge represents the electron coming out of the plane of the board, and the dashed line represents the electron going back behind the plane of the board. Each of the four sp3 hybrid orbitals contains one electron capable of forming a covalent bond. The sp3 hybridized carbon is now capable of forming four covalent bonds. Here, X represents any atom with a valence electron capable of forming a covalent bond. Because the electron density is symmetrically located about an imaginary line that runs through two adjacent nuclei, we call these bonds sigma bonds. An example of a simple carbon compound with an sp3 hybridized carbon is methane, CH4. The ideal bond angles are all 109.5 degrees due to all four equal in size hydrogen atoms attempting to get as far away from each other as possible. Your instructor will often draw methane on the blackboard as shown. Again, the two solid lines in this drawing are in the plane of the board. The wedge represents one of the hydrogens coming out of the plane of the board, and the dashed line represents one of the hydrogens going back behind the plane of the board. Another simple carbon compound that utilizes sp3 carbons is ethane. From the two-dimensional Lewis diagram, we see that each carbon has four single bonds. Thus, both carbons are sp3 hybridized. Starting with two sp3 hybridized building blocks, we can start to construct the molecule in 3 dimensions by forming the CC sigma bond. Next, the 6 hydrogen sigma bonds are formed, which affords the final 3-dimensional structure for ethane. The 2-dimensional Lewis diagram for ethane implies that all 4 bond angles are 90 degrees. However, employing the basic principles of hybridization theory, we see that the bond angles are all nearly 109.5 degrees. Now that the molecular geometry for ethane in 3 dimensions has been determined, we can begin to examine some of ethane's interesting physical properties. For example, free rotation may occur about the carbon-carbon single bond, which allows us to explore simple conformational analysis. Conformations are different arrangements of atoms due to these rotations. When we place the electron density around each hydrogen atom, we see that the hydrogen atoms from adjacent carbons do not touch. To make this diagram easier to view, we will remove the electron density from 2 of the hydrogen atoms from the back carbon. Even though the hydrogen atoms from adjacent carbons do not touch, there is torsional strain due to the electron clouds of the adjacent carbon-hydrogen bonds, which impedes the rotation about the CC bond. This gives rise to the staggered and eclipse conformations for ethane. The difference in relative energy between these 2 conformations is approximately 3 kilocalories per mole. It may be easier to remember that atoms want to be as far apart from each other as possible. Think of it as less crowded. When molecules are viewed down the CC sigma bond, we call this a Newman projection. Often you may see your instructor represent the Newman projection on the blackboard as follows. When we replace one of the hydrogen atoms with an atom that has a larger atomic radius than hydrogen, steric factors will arise, which will increase the barrier of rotation. As the dihedral angle changes, so does the relative stability of the molecule.
I hope you people have got the little idea how bonds are formed. Let me know. Okay. So as I was talking of resonance here, हम थोड़ा सा resonance को पढ़ेंगे डिटेल में. So write down here. And then we will come back to this question. Resonance and bond order calculations. What does resonance means? What does bond order means? We'll talk about this. So in this write down, let's first talk about resonance. Then we will talk about bond order calculation. In this write down, it is often observed that a single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule in conformity with its first write down, then I will explain experimentally determined parameters. Okay. Example. So everyone knows the structure of benzene. Let me know. Everyone have heard about this particular structure. है ना? बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. इस तरीके से 6 कार्बन जुड़े होते हैं और हर एक कार्बन पे ऑल्टरनेटली इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा. कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे हर कार्बन पे along with that you will have one hydrogen also. Okay, fine. मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं इस सेम स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ. क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? What do you think? Are the both structures same or is it different? Is it same or different? सेम कैसे दिख रहा है रेणुका आपको? मेरे को तो डिफरेंट लग रहा है. मैंने यहाँ पे एक बार पाई बॉन्ड बनाया है और एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, तो सेम कैसे हुआ? ये डिफरेंट नहीं है. पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड बदल रहा है तो सेम कैसे होगा? It looks different ना? So what happens? क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 154 पाइकोमीटर. ओके, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 134 पाइकोमीटर.
अब यहाँ पे ये 154 है, बट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 134 पिकोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है, दिस शुड बी 154 पिकोमीटर। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि ये सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के बीच में, उनका बॉन्ड लेंथ सेम है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिंगल का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, डबल का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, बट बेंजीन के स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन कार्बन जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है, दे आर सेम, एंड दैट इज 139 पाइकोमीटर। तो ये जो 139 पाइकोमीटर वैल्यू आ रही है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की वैल्यू है। एग्जैक्ट बीच नहीं बोल रहे, बट उनका कहीं ना कहीं उनके बीच में ही ये वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो एक पोजीशन में नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर नॉट एट वन पोजीशन। दैट इज वाई आप देखोगे बेंजीन को मोस्टली हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंट्स दैट कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इधर कार्बन के बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली। वो एक ही जगह पे फिक्स नहीं है कि इस और इस कार्बन के बीच में ही रहेंगे, नहीं, दे आर जस्ट कंटिन्यूसली मूविंग। सो इसीलिए बेंजीन को अगर हम हॉरिजॉन्टली देखना चाहें, लाइक दिस, और हर एक के ऊपर पी ऑर्बिटल है, तभी तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म है ना। ये आपके पास पी ऑर्बिटल हो गया। तो जो ऊपर वाला लोब है, ये सब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपके पास नीचे वाला लोब है, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और एक आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा नजर आएगा। हाइड्रोजन रहेगा, वो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसका हाइड्रोजन यहाँ है, इसका हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन विल बी देयर, बट आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा एट द top of this carbon and at the below of this carbon. So actually this will look like this. So there will be some electron cloud at the top of this thing, and there will be some electron cloud at the बॉटम ऑफ दिस। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनका कोई भी एक पोजीशन नहीं है। इज इट क्लियर? सो दिस फेनोमेनन, जहां पे हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बॉन्ड लेंथ के बीच में, मतलब सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर, तो वहां पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ड्रॉ दीज डायग्राम्स। तो ऑल टुगेदर हमने ऑब्जर्व, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, और दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द बेंजीन। सो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों को मिला के जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रियलिटी में बेंजीन ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं। इवन दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप चाहे तो लिख लो, these are hypothetical structures and they do not exist.
Done writing? ओके। सो अगर आपको ऐसे कहीं भी दिख रहा है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड वगैरह दिख रहे हैं, इसका मतलब वो है कि दे आर गोइंग टू अंडरगो रेजोनेंस. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओजोन. ओजोन का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस. 3 ऑक्सीजन एक तरफ से जुड़े होते हैं, 2 लोन पेयर होगा. यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर उसके पास बचता है. इसको मैं दूसरे तरीके से भी ड्रा कर सकती हूँ. मैं डबल बॉन्ड ओ यहाँ कर दूं, सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ कर दूं. So these two are known as canonical structures. And इनको combine करके जो आप structure ड्रॉ करोगे, तो लोन पेयर ड्रॉ कर दो. इन दोनों के लोन पेयर फिक्स नहीं है, और जो बचे हुए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कभी इस ऑक्सीजन के पास हो रहा है, कभी इसके पास हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है. इसलिए हम इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो करेंगे. So this structure is known as hybrid structure. Is it clear? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओ जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओके, वो होना चाहिए 148 पाइकोमीटर, और जो यहाँ पे डबल होता है वो 121 पाइकोमीटर होता है. सिमिलरली ये होगा 121 पाइकोमीटर और ये 148 पाइकोमीटर. बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि दोनों का ही लेंथ आपका एग्जैक्टली सेम है. दैट मीन्स ये 128 पाइकोमीटर है और ये भी 128 पाइकोमीटर है. तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस. मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ओजोन ड्रॉ करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती. मुझे ये ही स्ट्रक्चर शो करना पड़ेगा ओजोन को ड्रॉ करने के लिए. तो यहाँ पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू द concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken into canonical structures of the hybrid, which describes the molecule accurately. ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिंगल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते.
हमको या तो मोर देन 2 या उससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स लग सकते हैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो उसका बॉन्ड लेंथ, उसकी प्रॉपर्टी क्यों इस तरीके से है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेजोनेंस। राइट डाउन दिस। Done writing?